अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है CISSP डोमेन 8, और डोमेन 8 क्या है? डोमेन 8 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी, और इसका आज हम पार्ट 12 जो है उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से ये लास्ट पार्ट है इसका, और हम अपने 8 डोमेन्स को फुली नोट्स के साथ रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये सारे नोट्स एंड लेक्चर्स जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेथडोलॉजी ऑफ विजडम। ये सारे नोट्स जो हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन जो है उनका जो है एक्सप्लेनेशन मैंने उर्दू में किया है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और CISSP की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से हर तरह के ऑथेंटिक सोर्सेस से ये किया है। मैंने अल नाफे इंस्टीट्यूट से ये CISSP का किया है, और उन्हीं के वेबसाइट्स जाकर मैंने जो है इसकी मोटिवेशन हासिल की, और मैंने वहाँ से सीखा। और फिर इसके बाद जो है मैंने इसकी ऑफिशियल बुक भी मंगवाई, ISC स्क्वायर। उससे भी मैंने काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद ली। तो जो है ये हुआ है। अगर मैंने कहीं कोई गलती की हो, या हो सकता है कि कोई बात मेरी समझ में सही से आई ना हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि अगर मैंने मेहनत करके ये रिसोर्सेज हासिल की और ये तालीम ली, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी रोशनी दूसरों तक भी फैले ना। तो अगर जो है फिर कहती हूँ कि कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। इसका जो है आज पार्ट 12 है। मैंने डोमेन 8 का पार्ट 11 को पॉइंट नंबर 70 के ऊपर क्लोज किया था, और आज मैं पॉइंट नंबर 71 से इसका पार्ट 12 शुरू करती हूँ। पार्ट 12 शुरू होता है पॉइंट नंबर 71 से। सॉफ्टवेयर डाइवर्सिटी is the idea, just like a biodiversity, where there are many different software titles to achieve the same object. लाजमी ये मार्केट है, कंपटीशन चलता है, और चीज़ें मतलब एक ही मकसद के लिए कई सॉफ्टवेयर बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडर अ डिवर्स बायोम ऑफ सॉफ्टवेयर there would be many different kind of word processing, operating system, mail server programs, etc. instead of few to choose ना। दुनिया अब ग्लोबल विलेज हो गई है, और है ना हर चीज़ के अंदर वैरायटी अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 72, कोड रिपोजिटरीज is an archive of the code that is being worked on. Beyond the code itself, you can keep things such as documentation, notes, web pages, and other items in your repository. A code repository is required for any successful software development project. अच्छा, फिर आता है पॉइंट नंबर 73, एप्लीकेशन resilience. Scalability says that applications should be designed so that computing resources they require may be added to support increasing demand ना। ठीक है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर इसका दूसरा पॉइंट है elasticity. It goes step further than scalability, and says that applications should be able to automatically provision resources to scale when necessary, and then automatically deprovision those resources to reduce capacity and cost when they are no longer needed ना। तो स्केलेबिलिटी जो है वो जो है ना इंक्रीजिंग डिमांड को मीट करती है, लेकिन जो इलास्टिसिटी है वो फिर हर चीज़ को ऑटोमेटिक कर दिया कि भाई अगर जो है
ایک چیز کا ضرورت ختم ہو گئی تو پھر ریڈیوس کر دو نا کیپیسٹی کو. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 74 سورس کوڈ کامنٹس. Commenting involve placing human readable description inside of computer programs detailing that the code is doing. یہ ایک ریڈیبل ڈسکرپشن ہوتا ہے کہ کوڈ کیا کرتے ہیں. پراپر یوز آف کامنٹنگ کین میک فائنڈنگ بگس فاسٹر. Further, commenting is very important when writing function that other people will use. پھر آتا ہے 75 error handling. Refers to the routines in a program that respond to abnormal input of conditions. The quality of such routines is based on the clarity of error messages and the option given to users for resolving the problem. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 76 hard coded credentials. Is a software development practice of embedding authentication data user ID and password. نا authenticate کرتا ہے یوزر کی آئی ڈی اور پاسورڈ نا، جو کہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے. ڈائریکٹلی انٹو دا سورس کوڈ آف اے پروگرام اور ادر ایکسیکیوٹیبل آبجیکٹ. دس از این opposed to obtaining the credential from external sources or generating them at a runtime. Point number 77 resources exhaustions. These problems often result due to an incorrect implementation of the following situations: error condition and other exceptional circumstances, confusion over which part of the program is responsible for releasing the resources. یہ جو ہے ایرر سے تعلق رکھتی ہے، کنفیوژن سے تعلق رکھتی ہے بات، کہ ایرر اور کنفیوژن آ جائے تو پھر وانریبلٹی بڑھ جاتی ہے نا. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 78 اور یہ اس کا لاسٹ پوائنٹ ہوگا 78. مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے آگے جا کر مجھے اور کوئی نئی چیز نظر آئے جو میں نے ان نوٹس کے اندر نہیں ڈالی ہے، تو پھر یہ پوائنٹ نمبر 78 سے بڑھ سکتا ہے. ادروائز فی الحال یہ پوائنٹ نمبر 78 اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے. اس ہے پوائنٹر ڈی ریفرنسنگ. وی مائٹ ہیو اے پوائنٹر کالڈ فوٹو that contains the address of a location in memory where photo is stored. When an application needs to access the actual photo, it performs an operation called pointer dereferencing. This means that the application follows the pointer and accesses the memory referenced by the pointer address. نا ٹھیک ہے. میں یہاں پر اب سٹاپ کرتی ہوں. الحمدللہ پورے ڈومینز جو ہے اپنے نوٹس اور لیکچر کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ کام صرف اللہ ہی کروا سکتا تھا، بندے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہے نا یہ کام پورا ہوا، اور میں ہوپ کرتی ہوں کہ آگے جا کر بھی جو جو یہ نوٹس کو پڑھیں گے اور جو جو اس کا ایکسپلینیشن سنیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور میں نے اپنے سے کوشش کی، اللہ اس کو قبول کرے اور یہ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تھینک یو فار لسننگ. السلام علیکم.